can say that this chapter tells us what is the concept of equality, what is the value which the equality teaches us, why do we talk about equality in the society, why equality is important, why equality has to be followed in the society, and why does equality matter. अभी थोड़े दिनों पहले अमेरिका में एक किसी शख्स को मार दिया गया. कौन था वो? कैन एनीवन टेल मी? टेल मी. और किसी रीजन से मार दिया गया. क्यों? मैं आपको क्लू दे देती हूं कि उसको पुलिस वालों ने उसके ऊपर चढ़ गए और उसको ऐसे पकड़ लिया कि उसको सांस ना लेते बने और उसको मार दिया. उसके लिए एक आंदोलन चला, ब्लैक लाइव्स मैटर. मालूम है किसी को? आरती, शालिनी, तनिषा, तमन्ना, न्यूज देखते हो आप लोग? यस मैम. हाँ, क्या नाम था? मैम नाम याद नहीं आ रहे. थोड़ा दिमाग पे जोर डालो. फ्लॉयड करके क्या नाम था? पूरा नाम बोलो. बोलिए. यस, जॉर्ज फ्लॉयड. क्या नाम था? जॉर्ज फ्लॉयड. क्यों मारा था? क्यों किल किया था उसको? मैम क्योंकि वो ब्लैक थी. क्योंकि वो ब्लैक थे इसलिए उनको 25 ऑफ मई के दिन पुलिस वालों ने उनको पकड़ा. मिनियापोलिस की पुलिस ने उनको पकड़ा और उनके ऊपर बहुत छोटी सी बात का शक था, ठीक है, और उनको मार दिया. फिर उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा कैंपेन चला जिसको कहा गया ब्लैक लाइव्स मैटर. ठीक. अब आपको मालूम है कि काले और गोरे के वजह से उनको मारा गया था, ऐसा माना जाता है. तो यहाँ पे 3.1 में आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, why does equality matter? Now when we are talking about equality, it is a powerful moral and political ideal that has inspired and guided human society. Okay, and from the times immemorial, the human society has been guided by a moral of equality. Everybody is equal. Okay. ईश्वर ने हमको एक बराबर बनाया है. हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, पूरी फिजियोलॉजी एक सी है. हम अंदर और बाहर एक से हैं. जब हम एक से हैं तो हमें एक से अधिकार मिलने का भी पूरा हक है. It is implicit in all faiths and religions which proclaim all human beings to be the creation of God as a political ideal. The concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal worth regardless of the color. Have an equal worth regardless of the color. That means हम काले हैं या गोरे हैं, that hardly matters. Gender, race, nationality, हम कहाँ के भी हैं, कहीं पे भी हम गए और सपोज हम इंडियंस हैं, हम अमेरिका में गए या अमेरिकन हैं वो, रशिया में गए या रशियंस हैं वो,
ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलियंस है वो अमेरिका में गए, चाइनीज है वो किसी और कंट्री में गए, since we are all human beings, we assure that we are human beings and we have some rights, and out of all rights, this is one human right that we should be treated equally. We deserve equal consideration and respect because of their common humanity, because we are human beings. It is the notion of a shared humanity that lies behind, for instance, the notions of universal human rights or the crimes against humanity. So what had happened with the George Floyd was a crime against humanity. For a very petty reason, for a very small reason, he was killed because he was black. So in the modern world, when we talk about equality, all human beings are equal. Everybody has to enjoy a common status, privilege. Though in 18th century, the French revolutionaries used the slogan of liberty, equality and fraternity to revolt against the landed feudal aristocracy and the monarchy. सबको मालूम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर पूरा एक अकेला चैप्टर आपने पढ़ा, और 10th क्लास में नेशनलिज्म इन यूरोप में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिपरकशंस क्या हुए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जिसकी वजह से इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी का जो स्लोगन था वो चारों तरफ फैला, और अल्टीमेटली इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी मेड द नेशन स्टेट्स. यूरोप के अंदर जो नेशन स्टेट्स बने थे वो इसी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी को देखते हुए, फ्रांस में उसकी जो फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, उसके बाद बाकी और नेशंस, जिसमें कि सबसे पहले जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ, आपने पढ़ा हुआ है. देन देयर वाज यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन टू विद अ स्ट्रेंज केस, आपने जरूर पढ़ा है. So that was all based on the concept of equality, that everyone is equal. So everyone should have a nation, should have a common flag, should have a common national anthem, so that everyone should be treated on the equal footing. Yes, when we are talking about equality, there was no equality in Asian and African countries. When these countries were uniting themselves, Germany, Italy, then Britain, that time, the Asian and African countries later on, they were not on the equal footing because of the nationalism, colonialism, as well as that converted to imperialism, gave rise to the imperialism, and ultimately imperialism was one of the cause of treating people in a different manner, in an unequal footing, and Asian and African countries were under imperialism. जब इंपीरियलिज्म के अंतर्गत ये देश आते थे एशिया और अफ्रीका के, तो वो स्ट्रगल कर रहे थे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है. और तब इक्वालिटी नहीं थी, तब रंग के आधार पर हम काले हैं, वो गोरे हैं, इसकी वजह से, और जितने भी कॉलोनियल पावर्स थे जिन्होंने इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया था, वो सारे पावर्स कहते थे कि these blacks are white men's burden, ये श्वेत लोगों के, सफेद लोगों का बर्डन है कि वो ब्लैक्स को कल्चर्ड बनाएं. उनका ये मानना था कि वो लोग कल्चर्ड हैं, वो लोग ज्यादा सभ्य हैं, तो ये सफेद लोगों का बर्डन था कि ब्लैक्स को वो सभ्य बनाएं. आपकी बुक में एक फैक्ट शीट दी हुई है पेज नंबर 33 के ऊपर, that is the richest 50 individuals in the world have a combined income greater than of the poorest 40 crore people. This is a fact sheet that many people are there in the society, those who have got a lot of money, whereas people are there those who die of starvation, जो भूख से भी मर जाते हैं, ठीक है. So that fact sheet you read and write the
inequalities, हालांकि ये बहुत पुरानी UNDP की रिपोर्ट से लिया गया है, that has got a very less meaning for you all, but of course that explains you the economic inequality. The social inequality, when we are talking about the inequality on the basis of color. Thus, we face a very bad paradox. Almost everyone accepts the ideal of the equality, yet almost everywhere we encounter inequality. हम तो मानते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, लेकिन इक्वालिटी हमको सोसाइटी में नहीं मिलती है. कहीं पैसे के नाम पे इनइक्वालिटी है, कहीं कलर के नाम पर इनइक्वालिटी है, कहीं पर जेंडर के नाम पे इनइक्वालिटी है. आप लड़का है, वो लड़की है, ऐसा इस नाम पे भी हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है. नॉट ओनली इन इंडिया, देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपने जरूर न्यूज सुना होगा. एक दिन पहले की न्यूज है, हाथरस में क्या हुआ, एक रेप हुआ और उस बच्ची का जुबान काट दिया. So this is inequality on the basis of gender. So we need to have gender equality in the society. So it is a question of this kind that makes equality one of the central theme of social and political theory. और इसीलिए आपको ये इक्वालिटी का पाठ पढ़ाया जा रहा है. अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक ओवरव्यू लिया जाए सोसाइटी का, तो इक्वालिटी क्या होता है. नाउ द स्लाइड नंबर 2, दैट मीन्स point number 3.2, that talks about what is equality, that I have explained you at length कि equality क्या है. पहला एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें लिखा है men are superior to women. ठीक है. यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि men are superior to women, it is a natural inequality. You can't do anything about it if you are a woman or if you are a girl. What's wrong? Is this your choice that you become a man or woman? No. I get more marks than you in every subject, and I also help my mother in housework. What makes you superior? Now this girl is asking, काम मैं ज्यादा कर रही हूँ, मदर को सपोर्ट मैं कर रही हूँ, मार्क्स भी ज्यादा मैं ला रही हूँ, but the boy says I'm superior. This is natural inequality. Colored served in rear, मतलब कि काले लोग, कलर वाले लोग पीछे की तरफ जाएं. No dogs, Negroes, Mexicans. ना तो कुत्ते अलाउड है, ना नीग्रोज अलाउड है, ना मैक्सिकन्स अलाउड है. इसका मतलब ये जो दो हैं, ये ह्यूमन बींग्स हैं. ये जो है ये एक जानवर है और उस जानवर को इंसानों से या इंसानों को जानवर से मिला दिया गया. Even in India, when there was imperialism, when Britishers were ruling in India, they used to say dogs and Indians are not allowed. So this was one inequality on the basis of color. Now, drinking fountain. One side, that means in north, if it is whites, will go and have water. Then south side, the colored people will go and have water. Could you understand that? Restrooms. Washrooms भी होंगे तो colored लोगों के अलग होंगे और whites के अलग होंगे. So that was something very, very inhuman, very bad, very unequal. So the next part of this equality tells us about 3 dimensions of equality. Before we proceed towards that, equality of opportunities, natural and social inequalities are the 2 dimensions which have been discussed in your book. Now, if you talk about equality of opportunities, the concept of equality implies
that all people as human beings are entitled to same rights and opportunities to develop their skills and talent and to pursue their goals and ambitions. जैसे कहा गया कि ये लड़की है, ये कहती है मैं ज्यादा मार्क्स भी लाती हूँ और मदर का हाथ भी बटाती हूँ, लेकिन लड़का बोल रहा है मैं तो नेचुरली जो है वो सुपीरियर हूँ, इसलिए यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात आती है, जेंडर इनइक्वालिटी की बात आती है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है तो सोसाइटी के अंदर ऊंचा हो नीचा हो, पैसा ज्यादा हो कम हो, पुअर हो, everybody should have equal opportunities because everybody is having some goals, everybody is having some ambitions, so everyone should be given equal opportunity to pursue that. This means that in society people may differ with regard to their choices and preferences. They may also have different talents and skills, which results in some being more successful in their chosen careers than others. But just because a few are successful, because some became ace cricketers or successful lawyers, it does not follow that the society should be considered unequal. Everybody has got equal opportunities, everybody has got equal rights to pursue any field. So everyone has got equal opportunities. Okay, and for that reason nobody should be denied with any of the privileges to any of the human being. Now next, natural and social inequalities. A distinction has sometimes been made in political theory between natural inequalities and the socially produced inequalities. Natural inequalities that emerge between people as a result of their different capabilities and talents and the choices are often represented as natural inequalities. These kind of inequalities are different from the socially produced inequalities. जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, नेचुरल इनइक्वालिटी, मैं लड़का हूं आप लड़की हैं इसलिए आपको अपॉर्चुनिटीज का डिफरेंस मिलेगा, नो. One another problem faced by our society arises with the idea of natural differences, in that some differences which could be considered natural need no longer be seen as unalterable. For instance, advances in medical science and technologies have helped many disabled people to function effectively in society. Today, computers can help blind people, wheelchairs and artificial limbs can help in case of physical disability. Even a person's look can be changed with a cosmetic surgery. So that means whatever is the color, whatever is the features, whatever, whether the person is beautiful or ugly, that hardly matters. Everyone has got equal opportunities. Everybody has got equal right to prove his or her skills in different fields. And since everyone has got equal rights, everyone has got equal opportunities, everyone can show their talent, everyone can show his or her talent to prove himself or herself. So there is a chance of equal opportunity to everyone. The famous physicist Stephen Hawking can hardly move or speak, but he made major contributions to science. So this is the way how we can say that in the complex world where there is a very complex society is there, but still we have got equal opportunities, all have got equal opportunities, and this is the way how we cannot discriminate on the basis of color, on the basis of caste, on the basis of gender. Everyone is equal. Now, next part of your book chapter says that there are 3 dimensions of equality. कौन-कौन से 3 dimensions हैं? Political equality, social equality and economic equality. Okay, so this I will take up tomorrow, though it is a holiday, but still I will take up so that I can finish the chapter. Okay, thank you. Any questions? Any questions? No, ma'am. Okay, so whatever I told you, is that clear to every one of you?